Welcome to today's session of Healthy Go Life. ahead. I am Dr. Poornima Mathur and हमने अपने previous sessions में discuss किया हुआ है infertility, उसके different causes and how to evaluate infertility. So today we move a step further. Like when you go and consult for infertility treatment, you must have heard about intrauterine insemination, IUI. So today we throw some light on IUI, like what is it, when is it supposed to be done, how is it done, and who are the potential candidates for IUI. So before we dig into IUI, एक बार we'll have a brief go through of the reproductive physiology. How does conception happen? Pregnancy हमारी कैसे होती है? So this is the diagram. ये एक picture है female reproductive system की. अगर आप देख सकते हैं, there's a uterus, the fallopian tubes, and the ovaries. So हर महीने when you have periods, your ovaries make an egg with the intent of conception. Now when this egg बन के ready हो जाता है, that is prepared for pregnancy. The egg release होता है fallopian tube में. If at that point of time you have an unprotected intercourse, ये sperms जो है आपके वजाइना में डिपॉजिट होते हैं एंड वो बहुत बैरियर्स क्रॉस करके दे रीच द एग दैट इज इन द fallopian tube. वहां पर द sperm meets the egg and makes the baby which is known as embryo. ये एम्ब्रियो ग्रेजुअली माइग्रेट होके यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है वेयर इट स्टिक्स टेक्स इट न्यूट्रिशन एंड ग्रोज इनटू अ हेल्दी बेबी. So this is how natural pregnancy occurs. So when you come for infertility treatment, the first line of treatment जो हम देते हैं, obviously after your detailed evaluation, what suits you best. अगर हम मानते हैं everything is normal, so first would be ovulation induction कि हम बोलेंगे आपकी egg बनने की medicine and we tell you what would be the time to have a relationship. The next step is intrauterine insemination. So that is what we are going to discuss today. Later on, we'll cover the further topics हमारे जो IVF, ICSI and surrogacy है. So what is intrauterine insemination? Literal meaning में भी we take the sperm sample in a very layman language में हम वो sperm sample लेते हैं, process करते हैं and इसको inseminate करते हैं into the uterine cavity. So उसके different steps हैं. Ovulation induction हम आपको egg बनने की medicine देंगे which can include tablets or injections when needed. जब आपके egg बन के ready हो जाते हैं and we know कि this is the time the eggs are ready for conception release होने के लिए we give you the trigger shot. Plan करते हैं आपका कब IUI होना है. We take your husband's partner's semen, process it and then it is instilled into the uterine cavity. इसमें कहीं anesthesia involved नहीं है. No procedure is involved. It is only simple OPD procedure की तरह the sample is instilled. So is IUI same as IVF or is it different? सो अगर आप IUI देखोगे इट इज अ वेरी सिंपलर मोर नेचुरल टेक्निक. इट इज बेसिकली अगर हम पहली स्लाइड को याद करें कि जो नेचुरल प्रोसेस है जो स्पर्म्स हमारे सर्विक्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं थ्रू दी सर्विक्स यूट्राइन कैविटी ट्यूब तक जाते हैं, उस पूरे को प्रोसीजर को हम शॉर्टन कर देते हैं. वो हम वेल गुड क्वालिटी मोटाइल स्पर्म्स को डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में डाल रहे हैं सो दैट उनको जो बैरियर्स क्रॉस करने हैं वजाइना एंड सर्वाइकल म्यूकोजा के दे आर सरपास्ड. It has a success rate of around 15 to 20%. इसमें आपके eggs अपने ही हैं, we cannot use donor eggs इसमें and इसका बहुत ही short time लगता है and obviously it is a cheaper option. But in IVF it is a more complex procedure where you can use gametes, आप दोनों replace कर सकते हो. The success rate is obviously increased and it is more like depending upon your history after your evaluation. आपके जो fertility specialist है, they can guide you whether you are a suitable candidate for IUI or not, or whether you need IVF directly. So, how do we know whether I am a suitable candidate for IUI or not? क्या indications हैं कि IUI can be done हमारे केस में? The best judge whether or not आप में IUI successful होगा कि नहीं होगा, whether it will work out for you or not, the best judge would be your fertility consultant. I'll still give you a brief synopsis कि हमारे क्या क्या factors होते हैं जिसमें हमारा IUI help करता है. So this is a picture that will give you an idea. हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. They can be male के factors हो सकते हैं, factors आपसे related कोई factors है और combined factors हैं और certain which are unrelated factors. अगर हम जाएं, say for instance, अगर आपके पार्टनर को आपको अगर ejaculation में कोई प्रॉब्लम हो रही है
ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। हो सकता है कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से हम इजैकुलेट नहीं कर पा रहे, कोई न्यूरोलॉजिकल पोस्ट एक्सीडेंट कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया जिससे यू हैव डिफिकल्टी इन हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, कोई साइकोलॉजिकल कॉज है, या ड्यू टू सर्टेन मेडिकल फैक्टर्स आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो विच इज अफेक्टिंग द पोटेंशियल, इन दैट केस आईयूआई कैन हेल्प। आपको सीमेन के जो होते हैं उसमें जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हम एनालाइज करते हैं कि स्पर्म के नंबर कैसे हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, उसका शेप कैसा है, विच इज ओवरऑल अगर हम बोले थी क्वालिटी। सो अगर इनमें से कोई भी सब नॉर्मल होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिवियरली एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स, अगर हमारी माइल्ड काउंट कम है, अगर हमारी मोटिलिटी थोड़ी सी कम है, या शेप में थोड़ा सा फैक्टर है, तो सब नॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स जो है उसमें भी IUI gives excellent results. So as per WHO, अब WHO सब हमें पता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है अगर हम हमारे मेल पार्टनर का एक एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर हो, उनकी जो सीमेन एनालिसिस में एटलीस्ट 5 मिलियन की हमारी मोटाइल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन हो, तो दैट इज व्हेन वी कैन ऑप्ट फॉर IUI. So now about females. Now अगर मानो we have ovulatory dysfunction, ovulatory dysfunction मतलब हमारा एग नहीं बन रहा है, so अगर हमारे एग बनने में प्रॉब्लम है, IUI would give you a better yield than simple एग बनने की medicine and natural relationship. So these are the cases where IUI works. अगर हमारे cervix में कोई फैक्टर है, cervix is the uterus का lower mouth. Now अगर वहां पे कोई previous surgery हुई है जिसकी वजह से catheterization हो गया है, stenosis हो गया जिसकी वजह से these sperms cannot go ऊपर, या हमारा सर्वाइकल म्यूकस हॉस्टाइल है कि वो स्पर्म्स को आके ही इमोबिलाइज कर देता है एंड दी स्पर्म्स कैन नॉट ट्रैवल ऊपर, that is when IUI will surpass all these obstacles and sperms को directly uterine cavity में place करेगा and chances of pregnancy increase कर देगा. अगर endometriosis, we discussed endometriosis पहले भी, अगर हमें mild endometriosis है, I'm not talking about moderate to severe, it is mild endometriosis में the tubo-ovarian anatomy जो है relationship है maintained होती है, that is where हमारी IUI can work. नाउ अगर हमें साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे वजाइनिज्मस, हमने कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं दे हैव डिफिकल्टी इन हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप. नाउ लेडी को ड्यू टू सर्टेन एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दे कैन नॉट कंज्यूमेट द मैरिज रिलेशनशिप, रखने में पेन होता है विच इज नोन एज वजाइनिज्मस. Definitely we need to evaluate the cause of vaginismus so that we can improve the quality of life after correcting it. बट अगर हम साथ में हमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी साथ में करना है तो IUI would give us the best outcome in cases of vaginismus. Now there are other factors as well. Say for instance we have a serodiscordant couple. Serodiscordant couple मतलब लेडी जो है वो HIV नेगेटिव है बट हस्बैंड को HIV हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है. Now in order to prevent the female partner from getting the infection, they use barrier contraception. But how do we proceed ahead with pregnancy? हमें pregnancy भी चाहिए but हमें infection भी नहीं चाहिए. Now this is when the IUI can help you. जब हम मेल पार्टनर का सीमन वॉश करते हैं thoroughly, maybe a double wash, that removes the chances of acquiring HIV or hepatitis B through that sample, and we can achieve pregnancy through this with the help of IUI without the risk of the HIV transmission or hepatitis B transmission. So in cases like this, now say for instance if the female has HIV or hepatitis B, male does not want to get that infection but they want a couple, in those cases भी हमें IUI help करेगा. Now at times we've heard of unexplained infertility. Now unexplained infertility में आप evaluation करवाते हो, जो वाइफ है उनके फीमेल पार्टनर है उनके सारे पैरामीटर्स आर नॉर्मल, मेल के सारे पैरामीटर्स आर नॉर्मल, बट येट वी आर अनएबल टू अचीव कंसेप्शन व्हिच इज नोन एज unexplained infertility. In unexplained infertility, IUI has been proven with various studies to be a very effective modality of treatment with a success rate of around 15 to 20%. At times हमें frozen sample IUI, you know what is frozen sample IUI? Say for instance दी पार्टनर जो है उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ही इज यंग, से फॉर इंस्टेंस अ 20-year-old बॉय है, ड्यू टू सर्टेन मेडिकल फैक्टर और इलनेस, गॉड फॉरबिड ही हैज टू अंडरगो अ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी. If we go ahead with
फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, अब उन्होंने अपना सीमन सैंपल लिया, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है. नाउ एट लेटर टाइम इफ वी हैव एडिक्वेट सैंपल, हम वो यूज कर सकते हैं फॉर IUI एंड अचीव कंसेप्शन इन दैट कपल. और देयर इज कि हमें पता है द हस्बैंड हैज टू गो, फॉर इंस्टेंस हमारे जो सोल्जर्स हमें वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्किंग आवर्स, दे स्टे एट द माउंटेन्स, हमारे बॉर्डर्स पे दे स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, द वाइफ्स आर हियर, they cannot plan bar bar aana. Now in that case we can freeze the sample and keep it, and we can plan pregnancy even when the husband is busy working either overseas or somewhere far off, जिनके लिए उनके लिए आना possible नहीं है, maybe due to logistics the patient cannot travel, husband cannot travel. So that is where हम frozen sample IUI can be done. Now times donor sample IUI, you know what happens, donor sample IUI हमें कब काम करता है. Now अगर मेल में एजूस्पर्मिया मतलब मेल्स की जो सीमन सैंपल है उसमें अगर हमें स्पर्म्स नहीं मिल रहे, दो इट नीड्स एजूस्पर्मिया एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है जिसमें वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉज, वेदर इट इज करेक्टेबल और नॉट. इफ इट इज करेक्टेबल तो वी हैव सर्जिकल प्रोसीजर्स जिससे हम स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं एंड देन प्रोसीड विद IVF. Now, say for instance, अगर हमारी ovaries due to certain infection or radiation or chemotherapy, some the ovaries are atrophic. मतलब ovaries वो sorry testes are atrophic and they're not able to produce sperms. उस एजोस्पर्मिया में तो हमें डोनर स्पर्म लेना पड़ जाएगा. Now, in these cases, we can, if the female evaluation is normal, we can go ahead with donor sample IUI and achieve pregnancy. और से फॉर इंस्टेंस देयर इज अ जेनेटिक डिजीज इन द मेल पार्टनर जो हम नहीं चाहते आगे प्रोजेनी को ट्रांसमिट करने के लिए, से फॉर इंस्टेंस इफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर थैलेसीमिया पॉजिटिव, थैलेसीमिया ट्रेट है उनको, एंड वी डू नॉट हैव द फाइनेंसेस टू गो अहेड विद IVF एंड PGT. अगर हमारे पास नहीं है, देखो कपल कम्स कि भाई मैम हम दोनों थैलेसीमिया ट्रेट है, हमारे एक बेबी को थैलेसीमिया है, बट financially we cannot spend it now we can go ahead with IVF and go ahead with the genetic test, pre-genetic testing, and then get the embryo transfer. So we don't have any option of conceiving a healthy baby. You can change the gamete. The easiest one is the sperm sample. We donor sample IUI करके we can achieve pregnancy. And all the हमारे LGBTQ couples. Now if there is a lesbian couple and you want to go ahead achieve pregnancy, so you can actually take a donor semen sample and get pregnancy and achieve the goal of parenthood. So now it is, how is it done? So what do you anticipate in an IUI procedure? Now सबसे पहले is when you go and consult the doctor, आपके evaluation होंगे. There are certain prerequisites कि आपकी एज यंग होनी चाहिए, आपके पास गुड ओवेरियन रिजर्व होना चाहिए, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूब्स पेटेंट होनी चाहिए, मॉडरेट टू सिवियर मेल फैक्टर नहीं होना चाहिए, हस्बैंड की एटलीस्ट 5 मिलियन मोटाइल काउंट हमारी होनी चाहिए स्पर्म्स की. If everything is if in place, if your fertility doctor feels that you are a potential candidate for IUI, so आपका वो सबसे पहले वो stimulation करेंगे. तो ना how does that start is दी जाती है. Certain medications are given for the development of eggs, one or more mature follicles, obviously. So now this might include giving injections as well. So depending upon your response, your history, your ovarian reserve, आपके doctor will decide whether सिर्फ medicine देनी है और medicine plus injections देना है. All throughout आपकी scanning से repeated ultrasound से आपको monitor किया जाएगा कि how are your ovaries at the start of the treatment. How do you respond to the oral medications? आपको oral medicines दी हैं उसको. And then how do you, whether or not you need injections, how are the follicles growing? Now around day 10 12 के आसपास, when your doctor feels कि आपके हमारे follicles अच्छे बन गए हैं, the endometrium is corresponding, they've reached an adequate size of 18 to 20 mm के अच्छे हैं, there would be, it is followed by trigger injection. Now trigger is HCG injection जो हम देते हैं कि उस mature follicles में से egg release हो और हमें fertilization and pregnancy के लिए available the final maturation के लिए. So you are given the egg release के लिए trigger injection. Now this trigger के हम usually 36 hours के बाद, it is very much time because after 36 hours is जब हम expect कर रहे हैं कि आपका egg release होगा.
Now that is when we want कि हमारे healthy sperms वहाँ पे available हो to make the baby. So after giving the trigger, you are given certain advice. Now all throughout अभी तक you were allowed to have a relationship. IUI का मतलब ये नहीं होता that during the entire cycle you're not supposed to have a relationship. At times people come and ask कि मैम हमें relation रखना allowed है कि नहीं. This is we are just augmenting or enhancing the natural conception. So during this you can have a sexual relationship. Even on the day of trigger you are allowed to have a sexual relationship. When you are forbidden, the very other tomorrow after 36 now does it happen IUI हमारा कैसे करते हैं now that day of IUI separated from the immotile and unhealthy sperms. Now ये जो हमारे motile healthy sperms हैं they are in a 0.5 ml हमारे media में they are sequestered. Now this sperm sample is then placed into the uterine cavity. So and that is how IUI is done. So IUI जो अगर हम देखेंगे once it is placed, now it is entirely done without anesthesia. It is an OPD procedure, no pain involved. You can actually go home after half an hour of IUI procedure. इसके बाद we usually give you luteal phase support. The doctors prescribe certain medicines which have to be taken, and it is followed by a pregnancy test after a specific period of time, which would be guided to you as per your cycle. Now IUI की अगर हम सक्सेस रेट देखें तो IUI जो है दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर वुमेन जिनको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है कि हमारे एग्स नहीं बन रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है. इट इज नॉट इफेक्टिव अगर हमें सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, एडवांस्ड एज है, सिवियर मेल फैक्टर है, दैट इज व्हेन IUI डज नॉट वर्क. So there are certain it is that certain contraindications as well. When can IUI not be done? When do I know कि भाई मैं IUI के लिए I'm not an ideal candidate for an IUI? So they absolutely अगर हमारी दोनों tubes blocked हैं और severe male factor है और it is हमें genital tract infection है, so that is when we cannot go ahead with IUI at all. और प्रेफरेबली इन ओल्डर वुमेन उनको इनफर्टिलिटी को बहुत टाइम हो गया है, पेल्विक सर्जरीज हुई हुई हैं, so that is advanced stage of infertility, very low ovarian reserve. So that is when IUI is not done. So this is all about IUI. Just believe that even miracles take a little bit of time and you can reach there with a little bit of help and little bit of guidance from us. Thank you so much. Are there any questions? When should we go for IUI? See, it is whenever your doctor suggests. I said it is only after your detailed evaluation when the couple is evaluated and the doctor feels you might benefit from IUI. That is when you should go ahead for IUI. On which day is IUI done after period? It is usually around 14th or 15th day that the IUI is done when we are expecting कि हमारा egg rupture हो रहा है, planned according to your cycle, which might vary plus minus 2-3 days depending upon your cycle, आपका response to particular drug. Around 14th-15th day. See IUI जो है that's a very nice question. It is IUI का जो सक्सेस रेट हम कहते हैं कि इट इज अराउंड 15 to 20%, दैट इज फॉर अ 3 cycles cumulative. बहुत स्टडीज हुई है उसके बाद द कंसेंसस हैज बीन रीच्ड दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग मोर देन 3 cycles. So if you think you okay my third has not worked, I'll go for fourth, fifth, sixth IUI, so that is not going to yield any result. So even for first try, if you're an ideal candidate, the IUI success rate lies somewhere around 15 to 20%. How can you make your first IUI successful?
You can actually just relax. Now, see, the doctor would decide whether you are eligible for IUI or not. You have to show complete faith in your treating physician. You, on your part, can only eat healthy, adopt a healthy lifestyle, practice exercise and yoga, reduce your stress. That is what you can do. Does IUI do a day of ultrasound? I think you need to ask, is ultrasound done on the day of IUI? Yes, at times the ultrasound, when we have a little bit of doubt, we, with the help of an ultrasound, we confirm ovulation. Where we figure out आपकी ovulation हुई है कि नहीं हुई है. To confirm ovulation, ultrasound is done on the day of IUI. Not mandatory though. Okay. So this was Dr. Poornima Mathur. I hope I could answer your queries. If you have any further queries, please feel free to call upon the helpline number. We at Oasis Fertility have all the latest technology and amenities to make your journey through this difficult time much more comfortable and easier and fruitful. Thank you so much.